हिंदी साहित्य के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना है कि एक किताब छपी अंग्रेजी में और वो भी लंदन में और नामित हुई एक विदेशी पुरस्कार के लिए, और उसके उपलक्ष्य में हिंदी का इतना बड़ा प्रकाशक इतना आलीशान समारोह कर रहा है। ये नए जमाने की आहट है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा शुरू में ही कि ये न समझा जाए कि हम सब ने ये उपन्यास अभी पढ़ा है जब वो बुकर के लिए नॉमिनेट हो गया। ये बात सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। सन 2018 में जब ये छप के आया तो सभी लोगों को लगा कि ये क्या आ गया, बल्कि अशोक माहेश्वरी जी, उन्होंने तुरंत ही एक गोष्ठी आयोजित की इसी एक उपन्यास पर, जिसमें हम 3-4 लोगों ने भाग लिया। और 2019 में जनवरी में जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में भी इसके ऊपर अलग से एक सत्र हुआ, मैं भी था उसमें। तो ऐसा नहीं है कि इसकी धूम तब से नहीं मच रही है, लेकिन ये शायद हमारा इतिहास है, हमारी मनोवृत्ति है। अब भी हमारी मनोवृत्ति है कि जब बाहर कुछ होता है तो उसकी धूम अलग तरह से मचती है। लेकिन हम लोग याद रखें कि फ्रेंचानुवाद और आंग्लानुवाद जो इसका हुआ है, उसके पहले से इस पुस्तक का हिंदी में विधिवत गुणानुवाद तो होता ही रहा है, बार बार हम लोगों ने किया है। मैं अनुवाद का विद्यार्थी रहा हूँ, तो उपन्यास के बारे में मैं कई बार बोल चुका हूँ, हम सब लोग कई बार उसकी चर्चा कर चुके हैं, लिख चुके हैं। मैं अनुवाद के बारे में, खासकर अंग्रेजी अनुवाद के बारे में कुछ कहूँगा, क्योंकि ये अनुवाद का ही समारोह लग रहा है मुझे। मैं जो लिख के लाया हूँ, मैंने पिछले महीने लिखा था। इंग्लैंड की एक पत्रिका ने मुझे अंग्रेजी अनुवाद भेजा उसकी समीक्षा करने के लिए। तो उस समीक्षा का अंतिम भाग मैं लेकर आया हूँ, जिसमें अनुवाद की कठिनाई और अनुवादक का मूल के प्रति रुख, डेजी रॉकवेल का, फ्रेंच का तो मुझे नहीं पता है, उसके बारे में कुछ चर्चा है। दिस नॉवल, ये मेरी समीक्षा का भाग है। दिस नॉवल इज continuously and contingently inventive, with all kinds of border crossings made to hang on the peg of a constantly reinvented Ma. Gitanjali Shri stated in a recent interview in Hindi that she began the novel with nothing planned and with no idea that it would end up in Pakistan. अरे मैं तो 200-250 पेज पढ़ गया उपन्यास के, तब भी मुझे आहट नहीं हुई, किसी प्रकार का आसार नहीं मिला मुझे कि पाकिस्तान चलना है अभी तो। Such inclusive spontaneity is matched by another main attraction of the novel, its language and style. It is narrated in an exuberantly, almost compulsively playful Hindi, and the tone is now lyrical and half rhyming and italicized, and now sharply witty, especially in dialogue. It includes half forgotten dialect words, जैसे मुझे प्रिय है, मैं गीतांजलि से 3-4 साल से कह रहा हूँ, हमारी ही तरफ की है गीतांजलि भी या उनकी तरफ के हम हैं। सक पहिता, हो रहा, डंगाल, इस तरह के शब्द सहज ही इसमें चले आते हैं। Phrases in English as well as Sanskrit, and a virtuoso deployment of Urdu, especially when the novel moves to Pakistan, which is only apt. Therefore, in more ways than one, the Hindi text would seem to be a translator's despair. But Daisy Rockwell steps into the ring, punching the air on full of bounds. She says that she has retained many Hindi words, some of which she has translated and some of which she has not translated. There is a sentence from a Hindi film which she has not translated, and she says if the English reader wants to know what it means, he can type it in Google. गीतांजलि के उपन्यास में एक वाक्य आता है, वो शायद डेजी भूल गई होंगी, कि जो गूगल में गया वो गया। तो गूगल जाने की सलाह क्यों दे रही है अनुवादिका हमको? Is it a kind of millennial resourcefulness on her part, or is it abdication of responsibility as a translator? Rockwell actually ups the stakes and takes the battle to the Hindi original. She says that if readers feel that a translation is rife with Hindi words and is, quote-unquote, not translated enough into English, the readers need to know that the original Hindi
was similarly packed with English. That's what Daisy says. I find, I've read the novel 3 times at least, I find that this is patently untrue. It's not packed with English in the same way. In any case, the elite fraction of Hindi speakers who read literary fiction are likely to know a lot more English in the multilingual Indian context than Western readers are likely to know Hindi. Rockwell makes the even more questionable claim that and I quote, that the original novel is artificially Hindi centric. That the original novel is artificially Hindi centric, just as, she says, her translation is artificially English centric. Daisy Rockwell has opened up a debate here about translation and the relationship between Hindi and English that I think we need to take on board, especially if we are going to go on discussing and celebrating the English appearance, the avatar of this wonderful novel, Adbhut Upanyas, Shuru se. One example of what Daisy does and work changes in translation is the very title has changed. Daisy's title is Tomb of Sand. Is Samadhi tomb? Is the primary meaning of Samadhi tomb? Daisy Rockwell quotes 3 definitions in her own translation, and the first one says meditation. That's the meaning that comes to mind. In Jaipur, when Gitanjali and I were discussing this at the Literature Festival, the title that we gave to the session was Meditations on Sand, not Tomb of Sand. And similarly, Animanto, in a translation in French, has highlighted border crossing, which is not in the title in Hindi. So things are beginning to change right with the word go. The French title is Au-delà de la frontière, on the other side of the frontier. So this is something that we have to take on board and perhaps to read the novel in Hindi again, bearing all this in mind. The last sentence, last couple of sentences, translation, like crossing other borders, involves a redefinition of identity and often a change of destiny. This novel in Rockwell's translation, as we know, has just been longlisted for the International Booker Prize. The chairperson of the jury of the International Booker Prize said it's the first Hindi novel to be nominated in this way. That's an understatement. It's the first Indian novel from any language to be nominated in that way, because before 2016, the rules of the prize were different. It was given for a lifetime award, and that is when Anantamurthy and Intezar Sahab and Amitabh Ghosh were all named in separate years, nominated for this prize. Now is given for a single book, translated into English. So it's the bigger achievement than even the Booker Prize realizes, this nomination. The novel in Rockwell's translation has been nominated for this prize, and in a post-colonial paradox, this is likely to elevate the already very high status that the novel has continued to occupy since publication in Hindi. अनुवाद को परकाया प्रवेश कहते हैं, वो तो दूसरे अर्थ में है, अनुवादक के अर्थ में है. अनुवाद से काया बदलती है पुस्तक की, और अनुवादक से किस्मत भी बदलती है कई बार. और आज इस अनुवाद के बाद और इसके उस पुरस्कार के नामित होने के बाद तो ये लग रहा है कि जैसे औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी और हिंदी का जो पारस्परिक संबंध था, वो विरोध का था, प्रतिरोध का था, अहिनकुलम संबंध था, वो संबंध अब बदल रहा है. इसका प्रमाण यह अनुवाद है और इसकी धूम है. अनुवाद में जो आवाजाही होती है, और आवाजाही केवल पाठ की नहीं हो रही है, यहाँ पर ख्याति की, कीर्ति की, पुस्तक के विक्रय की, पुस्तक के पढ़े जाने की, पुस्तक के प्रति हमारे जो विचार हैं पश्चिम में और यहाँ, उन दोनों में आवाजाही शुरू हुई है. और वो थोड़ी बराबरी की आवाजाही है. उस बराबरी जो औपनिवेशिक स्थिति थी, उसका उत्तर औपनिवेशिक संस्करण अब इस अनुवाद द्वारा हमारे सामने प्रमाणित होगा. बहुत धन्यवाद.